आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यू माइट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी एंड इट्स JEE तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे log y इक्वल्स 3 साइन इनवर्स x, देन वी हैव टू फाइंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश एट पॉइंट x इक्वल्स हाफ। तो देखो log y टू द बेस e इक्वल्स 3 साइन इनवर्स x, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल्स e टू द पावर 3 साइन इनवर्स x। नाउ वी विल फाइंड आउट y डैश। तो y डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पहले वाली जो स्टेप है वहां से log y डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन होगा log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y डैश इक्वल्स 3x, सॉरी 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल्स टू हाफ। तो y डैश इक्वल्स 3y, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इसका डिफरेंशिएशन है और हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट x इक्वल्स टू हाफ। तो y की वैल्यू एट x इक्वल्स टू हाफ पे क्या आएगी, y इक्वल्स e टू द पावर 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज 3 बाय सॉरी पाई बाय 6, एंड हम उसे अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो e टू द पावर पाई बाय 2। नाउ y डैश एट x इक्वल्स टू हाफ पे वैल्यू क्या आएगी y डैश की, तो y डैश इक्वल्स 3 इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एट पॉइंट हाफ। तो y डैश के एट पॉइंट हाफ पे वैल्यू क्या है, e टू द पावर पाई बाय 2 आणि अंडर रूट 1 माइनस हाफ स्क्वेयर इज 1 बाय 4. नाउ ऑन सिम्प्लिफाइंग वी विल गेट 3 e टू द पावर हाफ, डिनोमिनेटर में रूट 3 एंड अंडर रूट ऑफ 4 इज 2. So 3 and root 3 is 2 into root 3 e to the power pi by 2. तो हमें y डैश की वैल्यू क्या मिलेगी, y डैश इक्वल्स टू रूट 3 e to the power pi by 2. नाउ वी विल फाइंड y डबल डैश। तो y डबल डैश को y को डिफरेंशिएट करेंगे, हमें मिलेगा y डबल डैश। y डबल डैश इक्वल्स 3 इंटू डिनोमिनेटर में जो एज इट इज रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई का डिफरेंशिएशन y डैश माइनस 3y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, होल डिनोमिनेटर इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, square of under root 1 minus x square is 1 minus x square. Now y double dash equals 3 into 1 minus x square, y dash minus into minus plus 3y, denominator में 1 minus under root x and denominator में 1 minus x square. Now we will find this value at x equals to half. Y double dash is equal to 3y 1 minus x square y dash minus plus 3y by under root 1 minus x square and denominator में 1 minus x square. Now we'll put the value for x equals to half and 1 minus half 1 by 4 y dash की वैल्यू क्या है, at point half is e to the power pi by 2 into root 3. 2 into root 3 e to the power pi by 2 plus e to the power y की वैल्यू क्या है, एट पॉइंट हाफ इज e to the power pi by 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 by 4, डिनोमिनेटर में 1 minus 1 by 4 equals, on simplifying this step we will get 3 root 3 by 2 into root 3 e to the power pi by 2 plus 3 e to the power pi by 2, and on simplifying this under root 2 by root 3. So root 3 and 3 we will get root 3 and here 2 and 2 get cancelled and denominator में 3 by 4. Now we will simplify this, 3 into 3 and root 3 into 3 is 3 and 3 into 3 is 9. So e to the power pi by 2 plus root 2 root 3 e to the power pi by 2 and denominator में 4 by 3. Now we will put this value into the original expression which we have to solve, which is 1 minus x square into y double dash minus x y dash, which will equal to 1 minus half square is 1 by 4 and y double dash is 4 by 3 e to 9 e to the power pi by 2 plus 2 root 3 e to the power pi by 2 and x is half and y dash is 2 root 3 e to the power pi by 2.
Now we will simplify this. 1 minus 1 by 4 and 4 by 3 get cancelled, and we'll get 9 into e to the power. Sorry, we will take e to the power 5 by 2 common, in bracket 9 plus 2 root 3 and minus root 3. Now plus root 3 and minus root 3 will get 9 plus root 3. This is our final answer.